हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ASA एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं रेन एंड मार्टिन की हाई स्कूल ग्रामर बुक से एक्सरसाइज 22। ये एक्सरसाइज आपकी अ फ्यू और द फ्यू पर बेस्ड है। पिछली जो हमने एक्सरसाइज करी थी वो अ लिटिल और द लिटिल थी। ये है आपकी अ फ्यू और द फ्यू। इसमें दिया है इंसर्ट अ फ्यू और द फ्यू विच एवर इज सूटेबल। सेम तरीका है जैसा हम लिटरल के लिए किया था। फ्यू है तो नेगेटिव मीनिंग, अ फ्यू है तो पॉजिटिव मीनिंग और द फ्यू है तो जो भी है वो काफी है। डैश पब्लिक लाइब्रेरीज दैट वी हैव आर नॉट वेल इक्विप्ड। द फ्यू dash days that are left to him he spends in solitude and meditation. The few many Hindus study Sanskrit but only dash Parsis study Avesta. A few dash days rest is all that is needed. A few have you got dash potatoes left? A few it is a question of spending dash rupees. A few dash hints on essay writing are quite to the point. The few dash months that he spent in Ooty did him a lot of good. The few when I met him dash years after he looked old and haggard. A few dash short poems in the volume show signs of genius. A few in dash words he expressed his gratitude towards his friends. A few dash Americans have their offices in Kolkata. A few dash trinkets she has are not worth much. The few dash poems he has written are all of great excellence. The few तो ये जो आपकी एक्सरसाइज थी अ फ्यू और द फ्यू पे बेस्ड। अब मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 23।